I've been watching you. Not like in a creepy way. I've been tracking the war on city sensors. You seem terrifyingly competent. Anyway, this is where I usually show you around, maybe buy you a drink, but I got an eensy-weensy crisis. Let me just... What? No! Do not core dump! Dumb machine! Okay. Why don't you take a look around while I get to a good stopping point? You are gonna love this. Okay, so, remember when you stopped Calus, saved the city, and looked good doing it? When the witness made that connection after, it rebooted all our CloudArk security. I guess the Vex noticed because they busted in here and blew up 5 of my memorial servers. The audacity, right? Each server is nano-constructed from a Cloud Strider's core drive and filled with all their logs and records. They're irreplaceable. It's not like the Vex to destroy so randomly. There's gotta be a connection, probably on those wrecked servers. But any data connecting these 5 Striders was in the servers they blew up. Long story short, your buddy Ghost has some sensors I've never seen before. So I thought maybe he could help me scrape the data. Just go take a look at those damaged memorials. See if you can pick up anything. ये थोड़ा अलग है यहाँ पे. Welcome to the ये पूरा जो इतना बड़ा लिखा है. Well, this is a mess. Coincides indicating the broken memorials behind you. But at least you kept the whale safely in Neomuna. You know, it keeps the CloudArk running. We would be lost without it. And on top of that, we haven't even scratched the surface of what it has to say about darkness. Most immediately urgent is the broken memorials. The battle with Calus brought CloudArk security briefly offline, and some anomalous signal patterns were broadcasted unsecured, coinciding almost perfectly in timing with the activation of the whale. The Vex broke in immediately afterwards and destroyed 5 specific Cloud Strider memorials before retreating. Clearly a precision strike, but the question is why? Cloud Strider memorials house all of their personal and professional records for future generations to study. Quinn is sure the answer is somewhere in the destroyed files. With any luck, Ghost's advanced sensors can help her pull the data from the destroyed memorial servers and get a clear picture on why the Vex undertook such a risky attack. Go take a look around the hall first, alright? Get a good picture of how this place is in the parts that aren't on fire. Learn a little bit about Neomuna that doesn't involve sabotage or explosions. Then you can circle back to the memorials. Do some scans and hopefully blow my socks off with what you and Ghost can pick up. Explore the Hall of Heroes to learn more about Neomuna and about the Cloud Striders represented by damaged memorials. Art करने. Broken Memorial Quest. Visit the Archivist. Winterblade, हाँ? ठीक है? ये है रोहान का. यहाँ पे ओह उधर बात करना है. Welcome, Neomuna, to the Hall of Heroes, where history lives on in you. The Earth author Peter S. Beagle once wrote, "There is no immortality but a tree's love. No one dies so long as they are remembered." So join me, City Archivist Quinn Lagari, as we learn about the great heroes who have made our impossible city a reality. Okay. 8 में से एक है वो शायद. दिख रहा है मुझे अलग अलग. पता नहीं क्या बोलते हैं इन्हें. Hi, I'm Quinn Lagari, City Archivist. It's my job to keep the past alive. With so much history lost to the first collapse, preserving humanity's knowledge is one of Neomuna's highest priorities. If we do not know who we have been, can we truly decide who we shall become? I hate those things. They made me re-record all my originals. Apparently, my take on history can be too sarcastic. Okay, मेरे दिमाग में अभी सबसे पहले वो बंदी का नाम क्या है? नेसेस में फेल सेफ का याद आई इससे. और हाँ
इंफॉर्मेशन कियोस्क बाय द वे, ये दिमाग में आया अब, इन्हें इंफॉर्मेशन कियोस्क बोलते हैं. Altruism, affinity, awareness. These aren't just the Cloudstrider ideals. They are the soul of Neomuna. Each of the memorials filling this room is a server dedicated to the life of a fallen hero, made from their own augmented systems. Every communication and journal detailing their noble sacrifice is available not only for future Cloudstriders to study, but you as well. The truest way to honor our city's champions is by using their experience to improve ourselves. ये शुरू किया, टाक 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 पीछे फिर से यार. Here in the foyer of arrivals rests noble Rohan. This sacred space honors both the beauty and the grief in a hero's passing. Since lockdown, so much of our city lived vicariously through our champion, and so we feel his loss more keenly. Every Cloudstrider embraces mortality, but in the lives they save and deeds recounted, they are timeless. एक दो तीन चार पाँच, पानी में काफ़ी हैं. ओह यार, एक कोने से दूसरे कोने भेज रहे हैं. नॉट एग्जैक्टली एक कोने से दूसरे कोने, पर फिर भी जो भी हो, सबको पास में नहीं रख सकते. The seed of each plant thrives in soil enriched by fallen leaves. All they are, from inception to fruit, is an echo of who came before. The plants grown here in the Hall of Heroes are all reclaimed species, extinct on Earth and restored on Neomuna. They are memories of a lost homeworld, returned to life thanks to the safety and prosperity our champions provide. ओके, ये मेरे हिसाब से आखिरी होगा. चांसेस कम है. ओह ये रे वो जो तोड़े ना, एक दो तीन चार पाँच. Every drop that falls eventually reaches its end, yet the river continues on. That lone drop is simply a shape the river takes for a time. The water within rejoins the flow and continues on. Those loved ones who pass remain a part of us, forever shaping who we are and who we become. ओके, आखिर नहीं है मुझे. अरे यार, मैंने उसे ट्रैक नहीं किया, मुझे ट्रैक करना चाहिए. ओह, अभी भी दो और हैं. एक ये. The Bukas you see throughout the Hall of Heroes are attracted to the powerful emotions of visitors just like you. Over generations, they have acclimated to their human neighbors. Cloudstriders routinely use emotional support Bukas in training and therapy. They often select the friendliest chicks from those hatched right here, among their fallen predecessors. पूकास, हाँ, इनका नाम पूकास है. ये ऑर्गेनिक है या फिर मेटल से बने हैं, पता नहीं. थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक और मेटालिक लग रहे हैं ये. पूकास के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा मैं, सही बोलूँ तो. The founders came to Neptune in fear, desperate to survive the collapse. The traveler had left gardens on many planets and moons, but on Neptune, they found a harsh frontier of floating continents and dangerous storms. Compassion, cooperation, and innovation allowed them to survive, just as they now allow us all to flourish. ये सही है. एक मिनट रुकना, ये थंबनेल के लिए एक चीज़ देखना चाहता हूँ. फिल्म ग्रेन नहीं, स्क्रीन बाउंस नहीं, एडजस्ट, गेम प्ले ऑफ.
हाँ हाँ ठीक है, ये रहा। इसके साथ मेरे पास एक थंबनेल भी आ गया इसके लिए। चलो, ओ अब इन सबको हमें स्कैन करना होगा ना उसके साथ। मुझे लगा ये सीधे आर्काइविस्ट से बात करने के लिए बात कर रहा है। Maelstrom. She was one of the city's greatest military leaders. Ended the Cobalt occupation before she even became a Cloud Strider. Everybody loves him now, but back when Blue Jay was just Conrad Jane, the whole city hated his guts. Did all kinds of illegal sim research. The Strider. She was the very first official Cloud Strider. Losing her records hurts the most. Stargazer. You probably wouldn't expect a mathematician to be a great Cloud Strider, but I hear your Ikora Ray is kind of a nerd too. Siegebreaker. Telluride Magsy. He converted in the middle of the 20-year siege, and he ended it. But Vex captured his mentor, Puck. Magsy rescued Puck, but by then, the bots had stripped secrets from his brain. Old man couldn't handle the guilt. Took risks. Got hurt. That's awful. And eerily similar to what Osiris went through. I wonder if Rohan learned how to counsel Osiris from... Guardian, your strand, it's... What's happening? You recreated the memorial. Nimbus said your strand power could make things, but I didn't think they meant like this. Neither did we. I guess Neomuna's emotional connection to their heroes is strong enough to anchor this strand creation permanently. I've read some academic studies on veil transcription of the collective unconscious. I bet if I put you in cryo, I could... Quinn, maybe we should focus on the Vex for now. Why they attacked and if they're coming back. Yeah, I guess you're probably more useful not frozen. Right now. Let's see if we can figure out why the Vex broke in. तो हमें फ्रीज नहीं करेगी। हम ही ये क्या बोलते विटनेस को मारने वाले हैं और ये नियोमुना को भी फिर से बचाने वाले हैं उसके साथ। Let's see what I can do for you. So I need you to restore Stargazer's records. Quinn's avatar radiates cheer. All you need to do is sort of vibe with Stargazer, the city's most famous explorer. The short version is you must have tapped into some kind of connection with Siegebreaker. Emotional, experiential, something strong, whatever it was. So my theory is to do the same thing with Stargazer. The best place to start is emulating them somehow, looking for that same connection. I could expound on the psychological and philosophical theories if you want. There's a lot of interesting research into the nature of consciousness, especially given the CloudArk. Maybe the city's belief in the Cloud Strider helped you anchor the memorial, or maybe you're just that good at magic archaeology. Quinn is overjoyed to have one monument back, and that scientific mind is hard at work on the best ways to get you to reconstruct the rest. Between your strand capabilities and her historical knowledge, she's pretty clearly hoping you'll be able to restore all of the lost records. There's a whole city invested in the history of their heroes, after all. And ideally in the process, you can solve the mystery of the Vex attack. Built a data crawler app to scour Siegebreaker's database for mentions of the other 4 Cloud Striders targeted in that Vex attack. He references Stargazer and some kind of secret number-crunching algorithm. No context. So I need you to restore Stargazer's records. All you need to do is sort of vibe with Stargazer, the city's most famous explorer. Quinn believes your strand power can restore the destroyed memorials of Neomuna's hero by finding connection with those previous Cloud Striders, perhaps based on their unique places in Neomuna history. Stargazer, originally a mathematician named Laminak Lee, was an explorer. Their legacy revolves around witnessing grand events and recovering lost treasure. Engage in terminal overload activities to begin bonding with this legacy. Okay. टर्मिनल ओवरलोड शुरू कर सकते हैं ना। ये नहीं है टर्मिनल ओवरलोड, ये भी नहीं है,
shit. Gotta start reviewing applicants for the next Cloud Strider for Nimbus. I had at least a year. Loot the terminal rewards at the end of the activity. यहाँ पे एक और है यार, वो देख लेता हूँ क्या है इस बार. एक और कोई स्ट्रैंड से रिलेटेड कुछ होगा. Oh, नहीं, यहाँ पे. Hey, Lagari, how are things holding up over there? Heard the hall got hit. Oh, that's fine-ish. No load-bearing damage, and the rest is taken care of. A little unorthodox, but we're good. You sure? I can take a look. I'm sure. Save your resources for the more vital infrastructure. We'll have a bad time, a worse time, if the farms go. You let me know if that changes. Might not be as immediate as the siege, but our history's worth keeping safe. That's why you're my favorite, Sid. Ah, you say that to everyone. And I mean it to everyone. Okay. तो मुझे खुद जाना होगा. Requires Neomuna vendor unlock progress. यार एक मिनट रुकना यार. ये वेंडर अनलॉक प्रोग्रेस का है. इसके लिए तो मेरे हिसाब से वो निम्बस ही होगा. निम्बस के साथ किसी तरह अनलॉक करना होगा. ये वही है नियोमुना वेंडर जितना मुझे मालूम है. चलो शुरू कर. कैसे अनलॉक करूं? नो. टर्मिनल ओवरलोड नहीं. यहाँ पे नहीं है. टर्मिनल ओवरलोड समझ में नहीं आ रहा. फिर ये आ रहा नहीं है. एनग्राम ट्रैकर वो सब छोड़ो. टर्मिनल ओवरलोड समझ में नहीं आ रहा है. Looking good, pal. Landing ठीक है. Also the direct landing zone. Fuck यार, मुझे लगता है उधर जाना होगा अपना. वो लैंडिंग जोन की बात कर रहा है. ऐसे नहीं बोल रहा है कि एक्सेस टू टर्मिनल ओवरलोड. बोल रहा है एक्सेस टू लैंडिंग डायरेक्टली ऑन टर्मिनल ओवरलोड. ओह यस 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 यस. ओह धन्यवाद यार. पहुंच जा समय पे. हाँ अब जा जा जा. आ जा. ये जल्दी से मारते रहो. चलो चलते हैं. अबे यार
चलो चलो चलो, खुशकिस्मती से मिल गए यार इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे करने के लिए। लगभग आधा हो ही गया है, इतने जल्दी किया हमने। आसानी से हो जाएगा ये, पर प्रॉब्लम वही है ना, ये शुरुआत में काफ़ी लोग करेंगे, पर जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे और कम लोग करने लगेंगे ये। तो अनलेस टीम बनाओ, टीम की ये नहीं कर पाओगे तुम इतना आसानी से, जैसे ब्लाइंड वेल है अभी करेंटली उधर। ये ड्रीमिंग सिटी में जो ब्लाइंड वेल है उसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, अभी कोई करता ही नहीं है। ओह ये सही है। यार सायन स्टीन को हराना है ना, ठीक है। अपना सुपर इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पे। यार ओह इनके खिलाफ सुपर इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और बस एक ही बच्चा है ना। ये रहा बॉस। इम्यून? ओह इनसे मारना। ठीक मेरे ऊपर, वाह भाई वाह, धन्यवाद शुरुआत। मारा तो नहीं ना? अलविदा। और ये oh shit. Stage 3 of 3 ना? Defeat seismic the secretor, no idea वो क्या कर रहेगा, पर अभी के लिए मैं ये लेके उधर जाता हूँ। मेरे बोलने के 2 सेकंड बाद मुझे दिख गया किसे मानना है मुझे। मारो। अलविदा। अलविदा। किस्मत अच्छी थी कि मुझे स्टेज 2 में मिल गए लोग। ओह शिट, नहीं हुआ अभी। ये है एक्चुअल फाइनल बॉस। मुझे शायद बचा के रखने चाहिए था अपने हैवी एमो।
वो क्या था यार? अभी भी इम्यून है। एक और ये रहा। ओह शिट, मेरे पास कोई भी हैवी नहीं है यार। मेरा सुपर आने वाला है, पर वो मैं उसको आखिरी जब इसका बार बचा होगा ना उस पर इस्तेमाल करूँगा ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए ये। हैवी होता तो मैं इस पर इस्तेमाल करता यार एक, पर अनफॉर्चुनेटली कोई हैवी नहीं है मेरे पास। फोड़ो फोड़ो फोड़ो। वीकली चैलेंज कंप्लीटेड, ठीक है। वाह भाई वाह। अभी भी लो लेवल हूँ थोड़ा, उतना ज़्यादा नहीं जितना पहले, पर फिर भी लो लेवल हूँ मैं। ओह शिट, और ये मरा। ओह शिट, ये थोड़ा इन सबको तोड़ना पड़ेगा। 1771 शिट, ये हाईएस्ट है, ठीक है। इन्फ्यूज कर रहा हूँ। Esi Terminal to obtain a high security passcode. Esi Terminal अब कहाँ है? ओह 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 ओह, चलो चलते हैं। हैवी, धन्यवाद। और अब चलो यहाँ से निकलो और Esi Terminal चलो। Shit. With Neomuna Civil News, this is Jisoo Colorado coming to you live. We're reaching out to a Vanguard operative within our fair city. Mr. Ghost, can you hear me? Hello? Who is this? I'm Jisoo Colorado. Can you tell us more about your relationship with your guardian? What role do you play in defense operations? You're that news reporter. How did you access this channel? Do you consider yourself a representative of the Vanguard, or the Traveler itself? I don't. Please talk to Osiris. I suppose if we're going to keep saving the world over and over, we'll need to get used to talking to the press. Eventually. वो बंदा मुझे अभी भी सही नहीं लग रहा। ओह शिट, गलती करी, डेफिनेटली गलती करी। मुझे लगा था कि ये कोई मिशन टाइप का होगा, तो मुझे बस मिशन लेना होगा, फिर मैं निकल सकता हूँ। पर ना, सीधा हाइड्रा को मारना है बस। थोड़ा और हैवी दे दे। काफ़ी हाई डैमेज कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे,
ठीक जैसे ही मैंने वो ग्रैपल का इस्तेमाल किया, ये बंदा टेलीपोर्ट कर दिया। इसलिए ये बहुत अनोइंग होते हैं ये। और अनकंट्रोलेबल नहीं, अनस्टॉपेबल चैंपियंस। मारिया, इस बंदे को मैं मारूंगा। मार। इसे भी मारो, Y1 से बचे रहो। और पीछे एक और मिनटॉर है मेरे लगता है। नप, कोई भी नहीं है मेरे पीछे। जैसे ही उसने शूट किया मैं कूदने वाला था, और तब तक बहुत लेट हो गई थी। वन शॉट हूँ यार अभी भी इसका। पता नहीं इन्हें ज़्यादा ताकतवर बना दिया कि क्या हुआ है। मर रहा क्यों? आओ, इसलिए नहीं मर रहा था, ये उसे वापस ऊपर ही टेलीपोर्ट होना था। ओह, मैं जल्दी से अपना सुपर चाहता हूँ यार, इन्हें मार दूंगा, इन सबको मारूंगा। मारिया तू बहुत परेशान किया, अभी के लिए भी धन्यवाद, पर अब मारो सब। ओह, obtain a terminal by completing public events, looting chests or completing patrols. सही में टर्मिनल ओवरलोड की ढूंढना अब मुझे। बकवास। अब वो RNG है, पता नहीं कैसे मिलेगा वो। पब्लिक इवेंट्स, लूटिंग चेस्ट और कंप्लीटिंग पेट्रोल्स। पेट्रोल्स मेरे सबसे अच्छा मौका मिलने का वो पेट्रोल से ही है। एक बंदा माफ़ करना, पर एक बंदा अकेले है तो मैं नहीं करने वाला। Check this out. 15, वाह भाई वाह। नहीं 13, 11 12। दो लेवल बढ़ाने हैं। ओह यार, उन्हें जानबूझ के ये इतना कम रखा है, RNG इतना बकवास रखा है। उन्हें अपने मैट्रिक्स बढ़ाने हैं ना कि ज़्यादा लोग खेलेंगे, और टर्मिनल की अगर बहुत आसानी से देंगे तो लोग कम खेलेंगे। कोई चाबी नहीं मिली अभी भी। वहाँ पे, हाँ ठीक है। हो रहा।
और फिर से कोई चाबी नहीं। ओके, यहाँ पे टर्मिनल एक मिला है तो कोशिश करते हैं। चलो से भी मिल सकता है, पर ऑफ कोर्स नहीं मिला। हाँ, लो लाइट लेवल का यही मुसीबत है यार, सब कुछ मुश्किल है, सब कुछ। Just simply to free the array from the Vex. बस काफ़ी हैवी दे रहा है अब अचानक से। ऐसे ही बस पकड़ते जाओ और उम्मीद करो कि इसके आखिर में मिलेगा। Notes destroyed, huh? Oh shit. बहुत पास था मैं। लो B. Not a good combination. Low light level और बहुत पास रहना। ये देखता हूँ यहाँ शायद मिल जाए। अभी भी कोई टर्मिनल की नहीं। टर्मिनल ओवरलोड की, जो भी हो, टर्मिनल की, टर्मिनल ओवरलोड की, कुछ नहीं मिल रहा मुझे। Shit. Oh wow. Guardian, you have my full permission to wreak havoc.
टर्मिनल की दे दे मेरे भाई, टर्मिनल ओवरलोड की। With Neomuna Civil News, this is Jisoo Calorondo reporting. Scientists with the Civil Defense Ministry report that the mysterious signal causing CloudArk disruptions appears to be a psychic carrier wave. The most common use of this technology, of course, is the suspended energy matrix, which maintains our own CloudArk. Stay tuned to Neomuna Civil News for updates. इसके जल्दी से आ जाए यार शील्ड निकालने के लिए। ये है ना, और आप फुल करो। जल्दी चलो। यहाँ पे कहीं पे नहीं है, ऐसा होता था यहाँ पे पास में कहीं पे वो है क्या, एंकर ग्रैपल के लिए, पर नहीं है। चलो चलो चलो। अब मर गया, सही है। और अब फाइनल बॉस। इतना दूर होने के बावजूद भी भागो मोहन प्यारे, वरना तुम मर जाओगे। ओके बहुत अच्छे। मैं मरा, बच गया, बार बचा। मेरा सुपर अभी भी नहीं आया। वो खोला है क्या? नहीं, प्लीज दे दे टर्मिनल ओवरलोड की। यस, एकदम सही समय पे मिला मुझे। हाँ मारो। जा। CloudArk is stable and the citizens are happy. All thanks to you, friend. Okay. इसका क्या करूँगा 1771 का? इसकी भी जरूरत नहीं है।
हाँ इसकी ज़रूरत है अभी के लिए। ये आखिरकार मिल गया। सीधा हॉल ऑफ हीरोज चलो, फास्ट ट्रैवल। ये सुन लेते हैं थोड़ा। Intolerable. What draws the Empress' desire now? The soldiers Calus sends. While some of these may be the mindless clones you saw on the Leviathan, many more are deserters and traitors. Those who have forgotten what it means to be Cabal. That still troubles you? This is not a new state of affairs. No. But it is more than that. It is the further division of a people. It is destruction from within, by our own hands. Once I was hungry for the glory of battle. Even now I have never turned away from a necessary fight. But I see only foolishness here. The time when this fight could have been avoided is long past. I know. This is not reluctance. Only regret. ये अच्छे लगते हैं यार ऐसे वाले मुझे। थोड़ा लोअर अच्छे से देता है। ऑफ कोर्स मैं लोअर का इतना एक्चुअली ध्यान देता तो मैं सारे के सारे ये जो ओह शिट वो कहाँ पे गए अब? मेरे लॉक्ड क्यों हैं कमेंटेशंस? वो सब छोड़ो, ये लोअर वो सब कहाँ गया? ये रहा ना। हाँ ये पढ़ता अगर मैं लोअर का ना ध्यान रखता तो। पर फिर भी मुझे वो छोटे मोटे ऐसे डायलॉग सुनना पसंद है, मुझे पढ़ना उतना भली पसंद ना हो। यह ठीक हो गया था अपने? नहीं ये नहीं हुआ था। Algorithm is inaccurate, but acceptable shorthand. It's an occlusion in a way, perhaps, but if we ride along the edge, accelerated processing, gravitational lensing as applied to data. City's got 1 million people who'll pick up a gun to protect it. Oh, hey. I know you've heard it before, but honestly, you're doing great work, Guardian. Thanks, I mean it. I found Stargazer's algorithm in the data you recovered, except it's not an algorithm. They called it the occlusion. Love this stuff. My data crawler also pulled some old library records showing who else accessed Stargazer's archive back in the day. Maelstrom. She was the greatest military mind in history, and she's one of our smashed servers. It can't be a coincidence. If this occlusion spooked the Vex, maybe Maelstrom kept a backup of it on her server. She was a warrior. So go start some fights. I found Stargazer's algorithm in the data you recovered, except it's not an algorithm. They called it the occlusion. Love this stuff. My data crawler also pulled some old library records showing who else accessed Stargazer's archive. Same चीज वो बोल नहीं सकता पहले. She was the greatest military mind in history, and she's one of our smashed servers. It can't be a coincidence. If this occlusion spooked the Vex, maybe Maelstrom kept a backup of it on her server. She was a warrior, so go start some fights. But ये इसका नाम अभी अभी शुरू किया था, अभी भूल गया. क्या था इसका नाम? Stargazer. इसका नाम याद नहीं. मेलस्ट्रॉम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नहीं, मेलस्ट्रॉम ये था शायद, नहीं ये वाला ही था. वो एक क्लाउड स्ट्राइडर भी नहीं थी. पर हाँ हमने अभी स्टारगेजर का कर दिया.